Hello and welcome, my fellow teachers, my seniors, friends, and all those that prepared and gave the Uptet examination 2022. I hope you enjoyed the English part of it. Let's look at the solutions of paper 2. It wasn't really a difficult one. Let's look at it anyways. So, to begin with, here we have choose the correct sentence. Now we have 4 sentences here. Which amongst them is grammatically correct? Which of the sentence gives a complete proper meaning? Now the committee was divided on this point. The committee was one on this point. The committee have one on this point. The committee were one on this point. So here our correct answer is 4. Now why is it 4? Let me tell you. The committee were. Okay, first we have to get this committee, that's in plural. And then we have the past tense were. So committee were one on this point. That is, all of them cooperated on one point. They agreed on a point. The second one, which of the following is an example of simile? Okay, simile when we compare two different things entirely as one. Now, and we have the word as, as, which you often found when we are writing similes. So, anxiety is sitting on her face, life is a dream, a lie has no legs, I wandered lonely as a cloud. Okay, so our answer here is option number 4. Then we have change the following sentence into active voice. Okay, so active voice and passive voice. In active voice, the verb, okay, the verb in the sentence is the doer of the action. जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, वो डूअर होता है, मेन वर्क वही करता है. सो स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट. लेकिन जब पैसिव में हम उसे बदल देते हैं, यहाँ पर जो डूअर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट से काम करवाया जा रहा है, इस तरह से होता है. तो ऑब्जेक्ट आ जाता है स्टार्टिंग में और जो सब्जेक्ट है वो एंडिंग में आ जाता है. अब देखिए ये पैसिव वॉइस में है. द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमन. ओके, बाय द वुमन. सो यहाँ पर हमारा जो वुमन है, पहली लिंक जो है, हम क्या समझना चाहिए कि वुमन स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए और जो वर्ड विजिटर्स है इसको हम एंडिंग में भेज देंगे. सो आई बिलीव हियर आवर आंसर शुड बी द वुमन हैज शोन द न्यू बॉर्न टू द विजिटर्स. ठीक है, द वुमन हैज शोन द न्यू बॉर्न टू द विजिटर्स. सो हियर वी हैव द वुमन जो कि सब्जेक्ट है एंड शी इज द डूअर ऑफ द एक्शन. हैज शोन, एक्शन वुमन ही कर रही है. सो दिस इज एन एक्टिव वॉइस हियर. Then the next one we have select the antonym for the word adverse. Okay, adverse. Adverse is when you try to make the situation difficult for somebody. जब आप कुछ बहुत मुश्किल कर देते हो या बहुत ही टफ बिहेव करते हो. सो यहाँ पर हमारा जो एंटोनिम है which means opposite in meaning, we have here as the answer friendly. Then we have fill in the blank with the correct word to complete the proverb. So we have a proverb here. Blood is, इसका जो सही आंसर है वो है thicker. Blood is thicker than water. And the meaning of this proverb here from the olden times, it simply means that relationships that are natural, which are by blood, okay, they are more stronger than relationships we make with people after we grow up, after we meet new people, which is like water. Okay, so blood is thicker than water. Then next we have question 66. Give one word substitution for. Now the scientific study of insects. Okay, this is entomology. 66 is 2, which is entomology. Then we have 67. Point out the correct direct speech of the following. So direct and indirect. Now ये indirect में है. I asked why he was looking through the keyhole. I asked why he was looking through the keyhole. Okay, so starting में look at it, ये जो he है यहाँ पर हमें जब direct speech में करेंगे हम इसे you बनाएंगे. Okay, when we are talking to the second person pronoun जो हमारे सामने, हम उसमें you, you use करेंगे. So here my answer, I am selecting option number 1. Why are you looking through the keyhole? I said. ये जो why है ये हमारा question word है. Okay, that why are you looking through the keyhole? So I said, and now I am changing it to I asked why he was looking through the keyhole. Keep in mind
इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में हो जाता है, इसलिए जो वज है ओके इसलिए ये पास्ट टेंस में है सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। ओके हमें प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब्स यूज करने हैं, राइट, डू एंड नो, इन तीनों को हमें प्रॉपर टेंस में यूज करना है। सो इन नंबर 68 आई एम सेलेक्टिंग द फर्स्ट वन, my daughter never writes to me, okay, so I never know what she is doing. This is the correct answer for question number 68. 69, pick out the correct synonym of the word cantankerous. Okay, now अब देखो जो यहाँ पर चार words दे रखे हैं ना हमको, they are all similar. The little difference gives us the answer. Now if we talk of noisy, noisy means when you keep on shouting, okay, maybe a lot of students are sitting in a class, they are making noise, it can be any kind of noise. Then we have rash, somebody that speaks rudely in a harsh manner. Then disrespectful, somebody that does not respect you, maybe abuses you, uses bad language. And then we have quarrelsome. Now quarrelsome is the synonym, okay. I am selecting quarrelsome here as the answer because it gives us the synonymous word to cantankerous, which means shouting, fighting, arguing on some reason, trying to make up a fight here, okay, continuously trying to disagree with something. So we have this synonym for cantankerous. Then question number 70, pick out the sentence that has a demonstrative adjective in it. Now when we talk about demonstrative adjective, these are different types of adjectives or determiners, and these determiners show us the space or the time, the position of the space or the time. For example, if I say this book is on the table, now this here is my determiner which is telling me the position of the book, which is my noun. So in these four sentences I am picking option number 2, which is this kind of question is often asked in examination. So this here is my determiner and it is giving me a demonstration that this question, okay, this kind of question, and where is it asked? It is asked in examinations. So this is up to question number 70. Let's move on. 71. Now 71 to 75 will be answered from the passage about helicopters, which are different from aeroplanes. Now let's begin question 71. The word congested in the passage means, congested in simple English it means where it is very busy, a busy area that does not have space. So in the options here for question number 71 I have the place has no place. So there are some areas, there are some roads where ambulance cannot go, okay, ambulance cannot reach, maybe the roads are very narrow, जो पतली गलियां होती हैं वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स अक्सर कंजेस्टेड एरियाज में लैंड कर लेते हैं। एंड सबसे अच्छी बात क्या होती है हेलीकॉप्टर्स में कि वो होवर करते हैं, ओके, दे होवर इन द एयर। होवरिंग का मतलब होता है व्हेन द हेलीकॉप्टर इज इन अ स्टेबल कंडीशन, मतलब हवा में है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, लेकिन इट इज़ नॉट फ्लाइंग, लेकिन वो रुक सकता है हवा में, ऊपर जो उसका पंखा चल रहा होता है उसकी वजह से उसका बैलेंस रहता है, सो दैट इज होवर। नाउ a helicopter can hover while an aeroplane cannot. So according to the passage, hover means, okay, you see this is what I was just telling you, it can stay at one place in the air. हवा में एक जगह पे हेलीकॉप्टर रुक सकता है एंड ऊपर उसका पंखा चल रहा होता है, सो उस कंडीशन को कहा जाता है होवर, HOVER. Now 73, point out the grammatical category of the word perform. Okay, ये देखें यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है which is impossible for planes. Helicopters can perform actions that aeroplanes cannot. So यहाँ perform का grammatically वो कौन सी category में आता है? Is it an adverb, verb, helping verb या noun? Well, it is given a performance here. Helicopter के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर सकता है, वो perform कर सकता है, मतलब उसके जो actions हैं, उसकी जो ability है. So it is a verb here. Now let's move on. 74. Why is a helicopter used as an ambulance? Okay, we have this pilot aeroplanes या pilot helicopters जो कि एम्बुलेंस की जगह यूज़ किया जाता है, तो ऐसा क्यों? वेल जैसे पीछे हमने देखा था कि कंजेस्टेड एरियाज में एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, सो वी हैव ऑप्शन नंबर 1 एज द आंसर, इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस ईजली। इनएक्सेसिबल मतलब
इनएक्सेसिबल प्लेसेस जो एक्सेसिबल नहीं हो, जो आसानी से पहुंच नहीं पाती है एम्बुलेंस, वहां पर हेलीकॉप्टर जा सकता है. Point out the grammatical category of the underlined word very in the above passage. So now the verb very here, this shows that it is an adjective. Why is it an adjective? Because it is describing this word different. Very or bhi zyada. Okay, helicopters are very different from aeroplanes. So we are using question number 75 as adjective, the right answer. Then bees are kept in a, this is the first one, in an apiary. Then the idiom green-eyed monster. What does it mean? Green-eyed monster means to be jealous. When you are jealous of somebody, when you envy somebody. Then select the sentence in which the article has been wrongly used. Now when we talk of articles, we're talking about a and the. Okay, a when we're talking about consonant sounds, n when we're talking about vowel sounds. So which has been wrongly used here? A pupil, this is correct. 12 inches make a foot, this is also correct. He is a European, this is also correct. He is a MA. Now this is wrong here. Why? Because M, it starts with A, which is a vowel sound. So he is an MA. That is how it's going to be. This is going to be N. So he is an MA. This is the right one. Now pick the correct question tag from the options. Question tag, that is to say, we're going to have a question mark here. People shouldn't drink and drive. We have the word here shouldn't, this word here. So therefore in the options we look for it. Should they? People shouldn't drink and drive. Should they? Okay. लोगों को पीने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए. करनी चाहिए. Okay, that is how this question comes in as a question tag. Point out the part that has an error in the sentence. Now we have a whole sentence here which has been divided into 4 parts. You are learning English for the last 1 year, but you show no improvement at all. Okay, अब ये देखें यहाँ पर we have this for the last 1 year. एक एक्शन जो कि पास्ट से स्टार्ट हुआ है एंड अब तक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर है ना यू आर लर्निंग इंग्लिश पार्ट ए में, दिस इज वेयर इट इज रॉन्ग, क्योंकि जो चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई भी है उसमें वो वर्ड बीन आना चाहिए. यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर, क्योंकि ये हमारा जो एक्शन है ये पास्ट में शुरू हुआ था एंड अब तक चल रहा है. सो यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर. ओके, बाकी सब करेक्ट है. सो क्वेश्चन नंबर 80 में हमारा ऑप्शन है 4 विच इज ए. नाउ 81, टू च्यू द कर्ड. व्हाट डज दिस मीन? च्यू द कर्ड. ओके, दिस सिंपली मीन्स च्यू द कर्ड जब हम बहुत सोच कर कुछ करते हैं, बहुत आराम आराम से सोच सोच के कुछ करते हैं फिर बोलते हैं, दैट मीन्स च्यू द कर्ड. Complete the following sentence with most appropriate choice. He was very much ashamed of his mischief. This is straightforward. We have off here. Complete the following sentence with appropriate choice. Dash he stood first, he would have gone to America. So यहाँ पर हम use करेंगे हमारा word had. Had he stood first, he would have gone to America. So we have this as our answer. Then next we have fill in the blank. Of the sword and pen, the dash is more powerful. Okay, we have this proverb that the pen is mightier than the sword. So यहाँ पर जो ज़्यादा पावरफुल है वो है पेन, और पेन सेकंड वाला है. अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है हमारे, लेटर, लेटर, लास्ट, लास्ट वन. अक्सर कंफ्यूजन होता है इस स्पेलिंग में लेटर एंड लेटर. लेटर का मतलब होता है बाद में एंड लेटर मतलब जो सबसे आखिर में आया है. ओके, लास्ट वाला जो है ना उससे बिल्कुल प्रीवियस. तो हमारा जो वर्ड है यहाँ पर स्वॉर्ड एंड पेन में जो लास्ट में आया है वो है पेन. सो हमारा आंसर होगा लेटर, मतलब कि हम यहाँ पेन की बात कर रहे हैं, स्वॉर्ड की नहीं. विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स. प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो हम वर्ड से पहले लगाते हैं, एंड सफिक्स जो वर्ड के एंड में लगाते हैं. अब प्रीफिक्स जो हमें यूज करना है, बिहेव, गाइड, यूज, इनमें हमारा प्रीफिक्स है मिस, जो कि इनको एंटोनिम बना देता है, ऑपोजिट बना देता है. बिहेव, मिसबिहेव, गाइड, मिसगाइड, यूज, मिसयूज.
In this passage we have questions here. The first one now, what is the total time spent by the elderly lady in writing a postcard? So when we started reading the passage, we saw how comfortably she started. She looked for the postcard, she thought about the address, and even after completing the postcard, she kept on thinking whether she should take an umbrella or not when going to the pillar box. So total time spent, for this I am selecting option number 2, which is the right answer here, a full day. What happens when the time to be spent on some work increases? So अगर कोई काम करना है हमें एंड उसमें हम टाइम बढ़ा लेते हैं, ओके, वी इंक्रीज द टाइम, तो उसके बाद फिर क्या होता है? द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम. आप जितना भी वर्क देंगे, ठीक है, जो भी वर्क है, अगर आप टाइम बढ़ाते जाओगे तो वो जितना भी टाइम है वो उसी काम में ख़त्म हो जाएगा. द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम. ओके, that is option number 1 for 87. Then moving on for 88, what does the expression pillar box stand for? So the old lady jo thi, she was going to post that postcard. Look at it here. यहाँ पर देखें, deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street. अब देखो पोस्ट कार्ड कहाँ पोस्ट करते हैं? ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस में करते हैं, ठीक है, तो जो पोस्ट बॉक्स होता है. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है for 88, it is option 3, that is a pillar type post box. Okay, जो post box है वो pillar जैसा है. Who is the person likely to take more time to do work? कौन लोग हैं जो ज़्यादा टाइम लेंगे कुछ काम करने के लिए? ठीक है, काम है और काम चाहिए, और काम है तो और भी टाइम चाहिए. सो इसका एक जनरल मीनिंग जो है वो हम लेते हैं a man of leisure, जिसके पास समय ही समय है. And finally number 90, point out the most appropriate explanation of the sentence. Work expands so as to fill the time available for its completion. Okay, so इसका explanation ये है, whatever time is available for a given amount of work, all of it will be used. आप चाहे एक काम के लिए 1 घंटा दें तो 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे देंगे तो 2 घंटे में होगा. So जितना भी टाइम अवेलेबल होता है काम के लिए वो सारा ही उसमें यूज हो जाता है. So this was the solution of paper 2. I hope these were useful for you. Thank you.